child labor. Most of us know what it is. Many of us think it's wrong. But does any of us understand why it persists? Why, despite building more schools, offering free education, and raising awareness, do we still have scores of children losing out on the innocence and novelty of childhood? 3.3 million Pakistani children are economically exploited. Some of them are involved in the brick, coal, and carpet industry, all hazardous to one's health and safety. Some are part of the agricultural force, forced to work in the fields under the sweltering heat of the sun, while others are forced to be a part of a much more sinister trade. That is the sex trade, a more extreme form of child labor. What, you ask, prompts child labor in the first place? What would drive anyone to make the conscious decision to send a wide-eyed, vulnerable child to a realm dominated by adults? कम उम्र बच्चों से मुलाजमत करवाने के पीछे बहुत सी वजूहात हैं। किसी के फादर की डेथ हो गई है, एक कम उम्री में ही उसका बाप इस दुनिया से जा चुका है, अब उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, उसकी छोटी बहनें हैं, उसकी माँ है, ज़ाहिर सी बात है अब उस बच्चे को फिर स्टेप लेना पड़ता है और उस बच्चे के फिर जो घर वाले हैं, माँ हैं, वो भी मजबूर हो जाती है क्योंकि वो ख़ुद तो बाहर जा नहीं सकती, तो वो फिर मजबूर हो जाती है इस चीज़ पे कि वो अपने बच्चे को बाहर निकाले और उसे काम करवाए और अपने घर की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करे उसके ज़रिए। मेरा नाम कल्बे अब्बास है, मैं 5 क्लासें पढ़ी हैं, मैं जंग शहर का हूँ, मैंने इसलिए स्कूल छोड़ा, मेरे पापा का शुगर फट गई इसलिए, तो घर में कोई काम करने वाला नहीं था इसलिए मैंने काम करना है, मैंने फिर का हुनर भी सीख लूँगा, पैसे भी मिलेंगे। Poverty is one of the biggest reasons for this. It causes a family to make desperate attempts at surviving day to day. So the one way they can do that is if they all work, regardless of age, including the family's children. With rising demands for cheap labor, children join the workforce to bridge that gap. Since they aren't officially part of the workforce, they are paid significantly lower than their adult counterparts. Besides that, their naivety makes it easy for them to be manipulated into overexploitation and obedience. वो हम वेल्ड करते हैं और पैसे लेते हैं आगे से, एक रेट का हम लेते हैं लाख सवा, मैं कमाता 200-300 रुपये मोबाइल पे देता हूँ, इसमें 50-100 रुपये खर्चा मैं रखता हूँ, बाकी घर देता हूँ। Their safety and health are often at stake with the lowly conditions of their workspace. Sometimes, they're physically, verbally, and sexually abused by their employers. While in some areas they are offered education, these children tend to turn away from it. They believe that the skills they learn in the fields are much more useful than ABCs and 1, 2, 3s. Little do they know how much bigger the world is than the little fields they work in, how much they have to offer, how much the world has to offer to them. जब स्कूल का निज़ाम ठीक होगा, बच्चों को फैसिलिटीज़ मिलेंगी, फिर जाहिर सी बात है उनका भी दिल करेगा भाई हम पढ़ें, हम अच्छे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उनको उनका फ्यूचर पढ़ाई में दिखाया जाए, ना कि काम में दिखाया जाए कि आपने काम करना है तो आपका पेट पलना है। आपको उन बच्चों को मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग किया जाए कि भाई आप पढ़ोगे तो आपका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट होगा, लिहाजा इस बजाय इसके कि आप किसी कोई काम करें, कोई जाकर मैकेनिक बने या कोई चीज़ बने, उससे बेहतर है कि आप पढ़ो और आप अपना फ्यूचर पढ़ाई में बेहतर बनाओ। How do we put an end to child labor, you ask? We've tried implementing the laws we made against that, but alas, all laws are somehow broken anyway.
We've tried sending them to school, fostering them, trying to give them a normal childhood. We haven't, however, gotten to the root of it. Until poverty is wiped off the face of this planet, until we stop exploiting those from the working class, until we ensure means of equity for all, child labor will remain to be.